Hello everyone, welcome to the YouTube channel of giveup.com. I hope you all are doing good. So guys, in this video we have come up with the part 2 of Companies Act 2013. I hope you must have watched the Companies Act 2013 part 1 video. If you haven't watched, I'll put the link in the description box, and also you can click on the I button above. So guys, without wasting time, let's start the video. So guys, as you can see, the Companies Bill 2013 received the assent of the President of India on 29th of August 2013, and after publication of the bill in the Official Gazette of India on 30th of August 2013, it became the Companies Act 2013. Okay, so इसमें total 29 chapters हैं, 470 sections हैं और 7 schedules हैं. Okay, अगर हम लोग बात करें सेबी के syllabus की with reference to the Companies Act 2013, then they have given the specific reference to the chapters. So chapter 3, chapter 4, chapter 8, chapter 10, chapter 11, chapter 12 and chapter 27 is very important according to the Sebi syllabus. Okay, so these chapters are very important as per the Sebi syllabus, and in this video we have actually taken questions from chapter 3 and chapter 4, because chapter 4 is a big chapter and there are so many things to be covered. So we have selected some of the important MCQs, probable MCQs from these two chapters. In the upcoming videos we will cover the remaining chapters as well. Okay, so guys, let's move on to the question number 1. Question number 1 is which of the following matters has to be stated in a prospectus issued by the public company. So you can see here the sub options are there: date of opening and closing of the issues, details of the directors, client details of the company, and a statement of the accounts of the board of directors. So option A is 1 and 2 only, option B is 2, 3 and 4 only, option C is 1, 2 and 4 only, and option D is 2 and 4 only. So guys, the correct answer to this question is option A, that is 1 and 2 only. Date of opening and closing of the issues is must for the prospectus of the company, and details of the director has to be given. But these two things, 3 and 4, is wrong, because details of the company, it does not require the company to give the client details and also the statement of accounts of the board of directors. In the next slide we will go through what are the matters which needs to be stated in the prospectus issued by the public company. Okay, so these are the important matters. So there are so many matters which has to be stated. I have selected some of the important ones. Okay, so as you can see here, names and address of the registered office of the company, company secretary, chief financial officer, auditors, legal advisors, bankers, trustees, underwriters, इन सबका name and address देना होता है. Date of the opening and closing of the issue, and refund also, refund date, ये सब सारा मेंशन करना होता है. Statement by the board of directors about the separate bank account where all monies received out of the issues are to be transferred. जैसे कि कंपनी कुछ जो शेयर इशू करेगी, उसके बदले में जो उस कंपनी को कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होता है कंपनी को. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि दे हैव ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट एंड ऑल द मनी वट एवर द प्रोसीड विल द कंपनी विल बी रिसीविंग, they will be depositing in that separate bank account. Okay, and again details about the underwriting of the issue, that has to be given. Procedure and time schedule for allotment and issue of securities. Capital structure of the company is also to be given there in the prospectus. Any litigation, कंपनी के अगेंस्ट में कोई केसेस वगैरह नहीं चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई केस अगर पेंडिंग है, तो ये सब सारा स्टेट करना होता है उसमें. और यहाँ पे देखिए आप, रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर ईच ऑफ द 5 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. सो प्रोस्पेक्टस इशू के 5 साल पहले के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं वो देना पड़ता है. मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफर, टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इश्यूज एंड सच अदर पर्टिकुलर्स में भी प्रिस्क्राइब्ड. सो जो भी कंपनी का वो पैसा किस चीज़ में लगाना चाहती है, किस लिए वो पब्लिक ऑफर कंपनी इशू कर रही है, और वो जो पैसा प्रोसीड जो मिलेगा पब्लिक ऑफर के थ्रू, वो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में लगाएगी, क्या जेस्टेशन पीरियड होगा, प्रोजेक्ट्स कैसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब का सारा डिटेल्स इसमें रहता है. ऑलराइट, सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी should be accompanied by which of the following prospectus? So the option is red herring prospectus, option B is abridged prospectus, option C is
shelf prospectus, and option D is green herring prospectus. Okay, so the correct answer is option B, that is abridged prospectus. As you can see here that no form of application according to the section 33(1), no form of application for the purchase of any of the securities of a company shall be issued unless such form is accompanied by an abridged. Guys, abridged prospectus क्या होता है? कंपनी जो है अपना कॉस्ट कट करने के लिए जो भी उनका फुल प्रोस्पेक्टस होता है, डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस, वो काफ़ी बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ पेजेस एंड एवरीथिंग. सो स्टेशनरी कॉस्ट को कट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो मेन डिटेल्स है वो एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बनाते हैं और उसके अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ही पब्लिक को दिया जाता है और उसमें पब्लिक को सारा डिटेल्स मिल जाता है. बट इन केस अगर कोई फुल प्रोस्पेक्टस डिमांड करता है तो कंपनी को वो भी प्रोवाइड करना है. इट्स बीन रिटन हियर दैट द फुल प्रोस्पेक्टस इज टू बी मेड अवेलेबल टू अ पर्सन हु मेक्स इट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन. अदरवाइज कंपनी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से काम चलाती है और उसके साथ ही एप्लीकेशन होता है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन. Alright, so let's move on to the question number 3. So there is question number 3. It says in case of allotment of securities by a company, the amount payable on application on every security shall not be less than dash nominal amount of the securities. So you need to answer this from the options. Option A is 10%, option B is 2%, option C is 5%, option D is 20%. So the correct answer to this question is option C, that is 5%. Let's move on to the explanation. आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि जो भी सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है वो एटलीस्ट पे होना चाहिए, तभी जाके सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट होगा. गाइस, क्या होता है कि पब्लिक ऑफर में जब भी सिक्योरिटी अलॉट होती है, शेयर अलॉट किया जाता है, जो भी सब्सक्राइबर है उनको शेयर अलॉट किया जाता है, तो एक जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो डिफाइन किया जाता है सेबी के द्वारा, उसको मिनिमम उतना पेएबल होना पड़ेगा, तभी जाके कंपनी जो है सिक्योरिटी अलॉट कर सकती है. सो दैट हैज बीन गिवन एज ए 5%. ये सेबी का गाइडलाइंस है, यू कैन रिमेंबर दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन ए कंपनी मेक्स एनी ऑफर ऑफ securities or invitation to subscribe securities to a selected group of person, it is called. Option A is group buying, option B is insider trading, option C is personal placement, option D is private placement. So the correct answer to the question is private placement, option D. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है अपना शेयर खरीदने के लिए. उसमें इट इंक्लूड्स द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑल्सो. एज यू कैन सी दैट डेफिनेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज or invitation to subscribe securities to a select group of person by a company other than via public offer. IPO is something different, private placement is something different. IPO में क्या होता है कि वो पब्लिक ऑफर करती है, उसमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. बट प्राइवेट प्लेसमेंट्स में क्या होता है, इसमें कंपनी सेलेक्ट करती है ग्रुप ऑफ पर्सन और इसमें उनको सिक्योरिटीज ऑफर किया जाता है, शेयर वो खरीदते हैं. सो दैट इज हाउ द प्राइवेट प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. So let's move on to the question number 5. Question number 5 is in case of a private placement by the company, allotment of the securities must be made within 60 days. If allotment is not made, then the amount should be refunded within how many days? So you can go through the option. Option A is 30 days, option B is 15 days, option C is 12 days, and option D is 25 days. So guys, the correct answer to this question is 15 days. So guys, क्या होता है, according to section 42(6) of the Companies Act 2013, कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो उसे विदिन 60 डेज जो शेयर्स है अलॉट करना पड़ता है जिन्होंने शेयर खरीदा है. विदिन 60 डेज के अंदर अगर ये नहीं कर पाती है अलॉटमेंट कंपनीज, सो इनको विदिन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे इनको विदिन 15 डेज पैसा रिफंड कर देना होता है. अगर ये नहीं कर पाते हैं ऐसा तो उन्हें 12% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जितने दिन का भी लैप्सेस होगा कंपनीज की तरफ से उतने दिन का इंटरेस्ट इनको 12% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर इन द एक्सप्लेनेशन. यू कैन गो थ्रू दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how etc. are called. So you can go through the options. Option A is ESOP, employee stock option plan. Option B is deep discounted equity shares. Option C is sweat equity shares, and option D is employee exchange stock option. Okay, so the correct answer to this question is option C, that is sweat equity shares. So guys, sweat equity shares क्या होता है, इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे शेयर्स प्रोवाइड करती है
काफ़ी डिस्काउंट पे, नॉट अगेंस्ट द कैश, दे द कंपनीज प्रोवाइड द शेयर्स अगेंस्ट द कंपनसेशन फॉर द एफर्ट्स दे पुट, for the hard work they put for the company and for their technical services, for their labor services. Okay, यहाँ पे डिफरेंस भी है, डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ESOPs का क्या होता है. ESOPs देख लीजिए, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो एम्प्लॉय को परचेस करना पड़ता है. शेयर्स अभी परचेज नहीं करते इन द फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, क्योंकि इसमें लॉकिंग पीरियड होता है. ESOP, द शेयर्स आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज ओनली आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ESOP ग्रांट. And sweat equity क्या होता है, on the other hand, is direct allotment of the shares. In case of sweat equity, on the other hand, it is a direct allotment of shares at a discount. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के पास तुरंत शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बाय द कंपनी. टाइमलाइंस क्या होता है, अ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी ओनली आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग बिजनेस. एंड ESOP के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. स्वेट इक्विटी कंपनी आफ्टर 1 year इशू कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ कमेंसिंग बिजनेस. एंड ESOP के केस में वो तुरंत भी इशू कर सकती है, कोई ऐसा टाइमलाइन का प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, और लॉक इन देख सकते हैं, लॉक इन ESOP का मिनिमम 1 year है, और फॉर स्वेट इक्विटी देयर इज ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. ओके, so moving on to the question number 7. Question number 7, it is asking, a company limited by shares can issue the redeemable preference shares for the period not exceeding. So option A is 10 years, option B is 40 years, option C is 25 years, and option D is 20 years. So guys, the correct answer to this question is D, that is 20 years. But इसमें कुछ exception है. I'll explain that exception in the next slide. So guys, as according to the section 55(2) of the Companies Act 2013, company shall not issue an irredeemable preference shares. Okay, कंपनी कोई भी irredeemable preference share इशू नहीं कर सकती, बट कंपनी redeemable shares इशू कर सकती है, and the period should not exceed 20 years in case of a कंपनी. बट कंपनी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो होता है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में जो कंपनी इन्वॉल्व है उनके लिए ये पीरियड 20 years एक्सीड कर सकता है, बट नॉट मोर देन 30 years. यू कैन सी हियर, नॉट मोर देन 30 years, सब्जेक्ट टू द रिडेम्पशन ऑफ ए मिनिमम 10%. सो क्या होता है, 20 years खत्म हो जाने के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स. ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. सो उन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व है कंपनी, उनके लिए क्या होता है कि 20 years से भी एक्सीड कर सकता है उनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 30 years. बट क्या होता है, 20 years के बाद एवरी ईयर 10% रिडीम करने का प्रोविजन है. मिनिमम 10% ऑफ रिडीम करना पड़ता है फ्रॉम द expiry of 20 years. So let's move on to the question number 8. Question number 8 is, which of the following does not carry any voting rights in the company? So options are given here. Option A is equity shares, option B is debentures, option C is preference shares, and option D is shares purchased by qualified institutional buyers. So guys, the correct answer is option B, that is debentures. Debentures के केस में कोई भी voting right नहीं होता, बाकी all other options are having voting rights in the company. इक्विटी शेयर्स में भी वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी वोटिंग राइट्स होता है, बट वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है. सपोज प्रेफरेंस शेयर्स दे आर कंसर्न विद द डिविडेंड ओनली, सो देयर वोटिंग राइट्स इज लिमिटेड टू द डिविडेंड पार्ट ओनली. अगर कंपनी कोई डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन लेती है तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है उस डिसीजन में, दे कैन वोट. ओके, एंड शेयर परचेज बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, इट्स सेम लाइक शेयर्स. सो उन शेयर्स का भी अपना वोटिंग राइट्स होता है. ओके, इट्स सेम लाइक इक्विटी शेयर्स. Same you can see in the explanation here. Debentures are written promise for debt by a company under its seal consisting of the terms and condition regarding the amount of loan. Guys, debentures यहाँ पे explain किया गया. Debentures क्या है? It's just the promissory note by the company. उस पर seal लगा होता है कंपनी का, and terms and condition दिए रहते हैं कि कितना amount of loan principal कंपनी लिया है, and what the rate of interest will be paid by the company, what is the maturity date and maturity value, etc. So it's just like any promissory note. Okay, and here you can see, according to section 71(2) of the Companies Act, no company shall issue any debentures carrying any voting right. So companies को कोई right नहीं है ऐसा debenture issue करने का जिसका voting right हो. Alright, so moving into the question number 9. So guys, question number 9 is, in case of the alteration of its share capital, a company shall file a notice with the registrar within a period of, so option A is 15 days, option B is 10 days, option C is 60 days, and option D is 30 days.
So the answer to this question is option D, that is 30 days. क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना कैपिटल अगर इंक्रीज करना चाहती है या डिक्रीज करना चाहती है, कुछ भी ऑल्टरेशन हो कैपिटल में, सो रजिस्ट्रार को उनको विद इन द 30 डेज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल उनको नोटिस देना होता है. ऑलराइट, along with the altered memorandum में उनको सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ऑलराइट, so moving to the question number 10. Question number 10, a company must appoint one or more debenture trustee if it make an offer or invitation to the public or to its member exceeding dash for the subscription of its debentures. So options are given here. Option A is 500 members, option B is 1000 members, option C is 200 members, and option D is 50 members. So guys, the correct answer to this question is 500 members. That is option A, 500 मेंबर्स. क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करना चाहती है एंड इन दैट वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और वो कंपनी अगर 500 से ज़्यादा मेंबर्स को डिबेंचर इशू कर रही है, तो उसे एक कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी को. उस कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, एक या उससे ज़्यादा. सो सेम हैज़ बीन रिटन हियर. It's been written in section 71(5) of the Companies Act. No company shall issue a prospectus or make an offer or invitation to the public or to its member exceeding 500 for the subscription of its debentures unless the company has before such issue or offer appointed one or more debentures trustee, and the condition governing the appointment of such trustee shall be such as may be prescribed. Okay, so it's written here clearly 500. You need to remember the numbers only. Okay, क्योंकि एग्जाम में नंबर्स डेटा ज़्यादा पूछे जाते हैं. Alright, so guys, we have come to an end. Thanks for watching. We will come in the next video, and we will come up with the remaining chapters of the Companies Act 2013. We will come with the part 3 of the video, and we'll cover all the remaining chapters. Okay, thanks once again for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much.